Hello children, how are you? I hope you all are doing fine and you are enjoying these new things that you are learning in English, be it grammar or be it literature. Everything is so much fun in English. तो बच्चों आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में. But जब वो young थे, so we are going to talk about young Gandhi. We are going to know about what he was and how he was in his young days. So now let's look at the prologue. Born on October 2nd, 1869, Mahatma Gandhi is also known as the father of the nation. Whenever we think of Mahatma Gandhi, two words come to our mind: truth and non-violence, as he was a staunch believer in these two ideals. Gandhiji believed that there must be truth in words and deeds, and the absolute truth, the ultimate reality. This ultimate truth is God and morality. During the freedom struggle, Gandhiji introduced the spirit of Satyagraha to the world. Satyagraha means devotion to truth, remaining firm on the path of truth and resisting untruth actively but non-violently. So बच्चों, this chapter talks about Mahatma Gandhi, जिनके अपने खुद के notions थे, वो खुद के policies थी, जो वो हमेशा follow करते थे. He believed that things can work with the help of truth and non-violence. हमेशा सच बोलो, okay? सच का साथ दो और किसी को मारो मत, okay? मार हानि से कुछ नहीं होता. You have to follow the path of non-violence. If things can work with non-violence, why do you need violence in life? Okay? You have to be non-violent, you cannot cause harm to others. So now let's warm up, okay? Discuss the role of Mahatma Gandhi in freedom struggle. हमारे भारत देश को freedom मिलने में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था. So now let's discuss about it. But for that you have to gather your team of friends and your teacher, okay? And start discussing about it. Okay, teacher's tip. The teacher should start with a short narration over the life of Mahatma Gandhi before he came back to India in 1915. So teachers, so बच्चों, जो महात्मा गांधी जी थे, वो in the year 1915 he came back to India from South Africa. उसके पहले वो अपने लॉ की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका में गए. तो वहाँ पे उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, जैसे उनको लोगों ने ट्रीट किया, जो बर्ताव किया उनके साथ, उसके बाद जो उनमें चेंज आ गया, उनको अपने भारत देश के प्रति जो प्यार आया, जो उनको अपने देश के लिए सम्मान आया, that was all because of the events that happened with him in South Africa. So now let's read about this young Gandhi and know him better. It was a typical day at Alfred High School in Rajkot, Gujarat. The school had a big ground. Boys were running here and there. Some were playing football. One boy shouted, "Look!" The boys saw an Englishman riding a bicycle. Behind him was a peon who had to run to keep pace with the rider. As they entered the school compound, the headmaster came out to receive the guest. The visitor shook hands with the headmaster and both walked in. Someone whispered, "That's the school inspector, Mr. Giles." The boys were nervous. They were afraid of inspection. Just then, the school bell rang. It was a signal for all the students to go to their class. So children, Gandhi ji जो थे, वो he studied in Alfred High School, Gujarat, okay, in Rajkot, Gujarat. तो उनके स्कूल में एक बड़ा सा ग्राउंड था. So they saw that some boys were running and playing and everything. और तभी उनकी नज़र पड़ी एक इंग्लिश मैन पे जो साइकिल पे आ रहा था, okay? और उनके साथ पेस मेंटेन करने के लिए उनके पीछे पीछे एक प्यून दौड़ रहा था. और फिर वो जाते, जैसे ही स्कूल कंपाउंड पहुंच जाते, उनके जो हेडमास्टर होते हैं उनको रिसीव करते, उनको गेस्ट रूम में लेके जाते. और तभी स्कूल की बेल बज जाती है और कोई कोई बच्चे जिनको पता होता है वो कहते हैं कि ये तो हमारे स्कूल के इंस्पेक्टर है, मिस्टर जाइल्स, ओके? वो हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, ओके? तो वो वैसे तो फिर जब बेल बजती है तो सारे बच्चे जो होते हैं अपने अपने क्लास में चले. I want to go around and see what the boys have learned, Mr. Giles said as he walked briskly. The headmaster started walking towards the class with the brightest students, but Inspector Giles stopped him. "You attend to your work. I'll find my way." Mr. Giles entered the first classroom he came across. The students sprang to their feet and greeted him in unison. "Good morning, sir."
Okay, what's going on? Mr. Giles asked the teacher. This is the English class, sir, replied the teacher. Boys, I'm going to give you a dictation test. Take out your slates and chalks, said Mr. Giles. The boys immediately took out the slates and looked at him with rapt attention. Mr. Giles dictated 10 words. तो बच्चों, ये जो स्कूल इंस्पेक्टर होते हैं मिस्टर जाइल्स, वो हेडमास्टर जी से कहते हैं कि मुझे तो स्कूल का इंस्पेक्शन करना है, मैं एक एक क्लास में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं. तो स्कूल के हेडमास्टर कहते हैं ठीक है, और फिर वो उनके साथ चलने लगते हैं. तो मिस्टर जाइल्स कहते हैं नहीं नहीं, आप तो अपना काम कर लो, मैं अपने आप चला जाऊंगा. और वो पहले क्लास में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश की क्लास चल रही होती है. तो वो बच्चों से पूछते आप क्या कर रहे हो, तो वो बता देते कि इंग्लिश की क्लास चल रही है. और फिर उसके बाद उनको बोलते कि अपने अपने स्लेट्स निकालो, चॉक्स निकालो, मैं तुम्हें 10 वर्ड्स दूंगा इंग्लिश डिक्टेशन टेस्ट के. ओके, और उन्हें 10 वर्ड्स दे देते. द इंग्लिश टीचर वॉज नर्वस. He would be blamed if the boys made too many mistakes. He went around the class as the boys got busy writing the words on the slate. The teacher stopped at a desk. A boy named Mohandas was writing, trying hard to get the spellings right. तो जो इंग्लिश टीचर होते हैं अब वो तो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं कि अगर बच्चों ने गलत लिखा तो सारा ब्लेम तो मुझ पे आ जाएगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ. तो क्या करते हैं, जैसे वो बच्चों के पीछे पीछे एक राउंड लेते, क्लास में राउंड लेते, और वो एक डेस्क पे जाके रुक जाते हैं. तो जो इस बच्चे के डेस्क पे रुक जाते हैं उसका नाम होता है मोहनदास. ओके, जो करेक्ट स्पेलिंग्स लिखने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है. Okay, now let's see how much you followed this chapter. For that, what you have to do, you have to solve the performance tracker questions. तो जल्दी जल्दी ये tracker questions के जवाब दे दो. And now let's read this chapter further. The teacher looked at the word he had just written. He could see that Mohandas had made a mistake. He had spelled the word kettle as Kettle. The teacher coughed and tapped the floor with his foot to get his attention, but Mohandas did not look up. The teacher tried a couple of times more, but got no response. Meanwhile, Mr. Giles was finished with the dictation. The boys lined up to show him what they had written. The inspector was happy to see that most boys had spelt all the words correctly. "You've done a good job, boys," said Mr. Giles. Turning to the teacher, he said, "You've taught them well." The teacher broke into a smile. Just then, Mohandas stepped forward, showing his slate. Mr. Giles took one look and frowned. "You got this word wrong, my boy," he said, circling a word. The teacher's face fell. The correct spelling is Kettle, kettle. "Thank you, sir," said Mohandas. "Thank you, sir," said Mohandas. "I'll work hard and improve." तो बच्चों क्या होता है, जैसे ही टेस्ट ख़त्म हो जाती है तो सारे बच्चे अपनी स्लेट दिखाते. ओके, तो टीचर तो मोहनदास की हेल्प करने की काफ़ी कोशिश करते हैं क्योंकि मोहनदास ने तो वर्ड गलत लिखा है. केटल का स्पेलिंग गलत लिखा था, Kettal लिखा था इंस्टेड ऑफ Kettle. तो अभी बट फिर भी मोहनदास जो है वो ऊपर टीचर के पास नहीं देखता है, वो अपना वर्ड लिख के वहाँ पे ही बैठा रहता है. तो उसके बाद जब सारे बच्चे अपनी स्लेट्स दिखाते तो मिस्टर जाइल्स तो काफ़ी खुश हो जाते, टीचर को भी शाबाशी देते कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है. और तभी जाके मोहनदास अपनी स्लेट दिखाता है मिस्टर जाइल्स को. तो कहते हैं ये क्या, तुमने तो गलत स्पेलिंग लिखा है, तुमने Kettle के जगह तुमने लिखा है Kettal, ये तो गलत वर्ड है. तो मोहनदास जो होता है वो कहता है थैंक यू सर, आगे से मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करूँगा. Okay, so Mr. Giles patted Mohandas and moved on to the next classroom. But the English teacher was furious. "I am sorry, sir," said Mohandas. "I didn't know the spelling of that word." The teacher frowned. "You could have looked at what the boy sitting next to you had written. He got all the words right." Mohandas looked down. "I even drew your attention by tapping the floor, but you paid no attention," said the teacher. When Mohandas went home, he told his mother what happened in school. तो अभी इंस्पेक्टर चले गए. अब
टीचर को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मोहनदास ने गलत स्पेलिंग लिखा था। तो उन्होंने बोला उसको कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गलत स्पेलिंग लिखने की, तुम अपने बाजू में जो बच्चा बैठा था उसका स्पेलिंग कॉपी कर सकते थे, मैंने तो टैप भी किया था पर तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सब गलत कर दिया तुमने, ये क्या इंप्रेशन दे दिया तुमने मेरे बारे में, ऐसे बोल के। बट ये मोहनदास जो था वो काफ़ी अपसेट हो गया और वो घर चला जाता है और अपनी मम्मी से बात करता है। तो उसकी मम्मी कहते हैं, यू डिड द राइट थिंग बाय नॉट कॉपिंग द आंसर, said his mother. If Raja Harishchandra were in your place, he too would have done the same thing. बच्चों, आपको राजा हरिश्चंद्र पता है, वो कभी भी झूठ नहीं कहते थे, हमेशा सच कहते थे। तो उनकी मम्मी भी यही कहती है, मोहनदास जी की मम्मी कहती है कि जो तुमने किया वो सही किया, अगर तुम्हारी जगह राजा हरिश्चंद्र होते वो भी वही करते। मोहनदास beamed. He loved the play Harishchandra the Truthful. This is the story of young Mohandas Karamchand Gandhi, who later became well known as Mahatma Gandhi, the father of the nation. So ये कहानी थी हमारे महात्मा गांधी की, फादर ऑफ द नेशन की, ओके, जो सच का साथ देते थे, हमेशा सच एंड नॉन वायलेंस, ओके, अहिंसा का साथ देते थे। सो चिल्ड्रन, ऑलवेज बी ट्रूथफुल, देर इज नो नीड टू कॉपी, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव, ओके। नाउ क्विकली रीड दिस चैप्टर and do share the story with your friends also, and don't forget to practice the important words and the back exercises.